हेलो ऑल, वेलकम टू बिलियनर यूट्यूब चैनल। बिलियनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो लेट्स एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन एलियट वेव्स एंड ऑप्शन चेन. So on my screen you can see I have plotted Elliott wave which are having W, X, Y, XX and Z. So आप लोग अभी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम लोगों ने एलियट वेव प्लॉट किया है यहाँ पे इस स्क्रीन पे. स्क्रीन में आप देख रहे हो कि ये W मूव है, X है, Y है, XX चल रहा है अभी, XX ख़त्म हुआ है अभी एक्चुअली, और Z इज़ इन प्रोग्रेस. सो Z वेव जब 17,798 तोड़ेगा तो मिनिमम ये टारगेट आएगा. एंड देन अदर डाउन साइड टारगेट्स हैं 17,200 के. ओके, सो हमें लग रहा है कि ये काफ़ी बेरिश है और ये जो मूव्स है ये बेरिश मूव थे अप जाने के लिए, और आज इसने कंफर्मेशन दिया है कि ये अप मूव नहीं करेगा. एंड फॉर अप मूव वी हैव टू वेट फॉर ब्रेक अप दिस, बट ये अभी होने नहीं वाला. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट 18,344 इट विल ब्रेक एंड गो अप. 18,344 इज़ अ लास्ट स्विंग हाई. ये एक लास्ट स्विंग हाई है, मतलब प्रीवियस जो हाई है वो 18,344 है. ओके, ये टूटने के बाद ही अप मूव रहेगा, बट अभी ये टूट नहीं रहा है, फिर से गिरना स्टार्ट कर दिया है, तो ये तो भूल जाओ, अप मूव तो भूल जाओ अभी फ़िलहाल के लिए. सो नाउ टुमारो टू कन्फर्मेशन पॉइंट्स 17,900 एंड 17,798. ये लेवल्स ब्रेक करता है देन फॉल विल स्टार्ट. सो in next couple of sessions or next 1 or 2 weeks we can see these targets. That's what I am expecting. Okay, so downside is possible next. So now what we have seen today, let me show you on 15-minute chart. So just notice that there is no divergence here as of now. Okay, ये low point बनाया था यहाँ पे, MACD is low here, there is no divergence here. So whenever it is going to fall, it will be creating a divergence next. So now on 15-minute chart, as per the yesterday's analysis, हम लोगों ने कल बोला था कि जैसे ये 18,070 तोड़ता है तो नीचे गिरेगा. So and downside targets were 18,000. After breaking 18,070, 18,000 to 17,950 were our targets. So it has made 17,960 as a low, and that is almost near our target. So we can say that our targets were hit actually, right? So today you can see that it is moving still in the zigzag fashion, A, B and C. So I have to call it as a W, sorry, I have to call it as W, this as X, and Y is in progress. So tomorrow target would be, let me get some targets for you. So this is W, right? W, X, Y, right? So bare minimum target is 17,937, then 17,866. So these are some targets based on Fibonacci extension, considering this as a W move, this as a X move, and Y is in progress. That should come to these levels. Okay, so you can wait for the bounce above 18,000, 18,020 or 18,060. You can watch these levels. So ये आप levels आज कल ध्यान में रखो, ये दो levels जो कि अभी X wave के दिख रहे हैं. Okay, so tomorrow watch these levels, that this could be A, okay, and this could be B, and then again this will go down to C. So currently I see them as a ABC moves, but right now I need to add them as a impulse. मुझे अभी ABC ही move दिख रहे हैं यहाँ पे, ABC. So मैं अभी immediately 1 2 3 डालना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे 3 वेव शॉर्ट है 1 से एंड 5 वेव बड़ा है, तो ये इनवैलिड होगा काउंट. अगर मैं ऐसे प्लॉट करूँ और यहाँ पे ए दिखा दूँ आपको, सो दिस इज़ इनवैलिड एंड आई कैन नॉट से दैट. एंड टुडेज कन्फर्मेशन वाज वंस इट ब्रोकन द 18,000 टॉप. सो इनिशियली
around 130 it gave inverse move, right? This up move it gave, so this was a surprising move. So I was thinking that this is 1, this is 2, this is 3 and 4, it will 3, 4 and 5 it will go till 18,280. So ये मैं up move expect कर रहा था, but then after this fall it broken this high 18,000. So now I'm having full bearish view. This is not 1 to 3 impulse move, this is ABC itself, and currently ABC is in progress. So tomorrow just remember these targets on the downside. So 17,937 and 17,866, these are on the downside target. So you can also see there is a gap here, so which will get filled. So 17,880, somewhere near that there is a gap. So if it bounces back and then fails down, then these are the targets that you need to look for. So कल गैप अप के भी चांसेस है 18,020 to 60 ये रेंज के बीच में अप जाके ये गिरने के चांसेस है. So tomorrow again should be a consolidation day for first half at least. 1:30-2 बजे तक टाइम पास होने के चांसेस है. गैप अप होने के बाद अप मूव रह सकता है 18,060 तक, बट मोस्टली इट इज़ गोइंग टू गो डाउन टूवर्ड्स 18,900 and 17,900 and 17,870. So let's check option chain. In option chain I was expecting this, that 18,000 will be broken. So 18,000 as you can see is having less number of put writers now. Okay, 11,000 almost 12 लाख लोग एग्जिट कर चुके हैं इसमें से. सो ये नंबर अभी कम है इसके कंपेयर के, कॉल राइटिंग के कंपेयर से. 18,000 इज नाउ अ रेजिस्टेंस or a third biggest resistance. Okay, but tomorrow it will trade in 18,060 or 18,020 to 60 range, and then it should drop. So this will become the major resistance afterwards. ये एक possibility है. And downside, the support that we have, the major support that we have is this one, 17,800. So once it breaks and sustains below this 18,000, we can expect a dip towards 17,800. So tomorrow we have to watch how it behaves. And as you can see today, a lot of call writing happened. Call writers बहुत aggressively add किए 16 lakh, 12 lakh, 25 lakh positions, and put writers जो थे वो भागे हैं यहाँ से, ये strike से भागे. Okay, so put open interest is negative and call open interest is positive, then the market is bearish. So same thing, let's check on the built up. So built up clearly shows Bank Nifty was in a short side, Nifty was also in short side with price negative and open interest positive. It is called as short market, and other FNO 77 stocks were in a short side. And yeah, so this is how the market is working. So every day there are fresh shorts getting added, so the signs are clearly bearish. So we can expect our targets to be coming in the next couple of 1 or 2 weeks. We can see our target 17,200 to 300. So this is how the Nifty looks like. A Bank Nifty, let's check the chart. So Bank Nifty is clearly bearish, but it is trading in channel and it has divergences. So let me show you. So Bank Nifty, you can see here, right? This is a divergence. This is a price is making lower low and RSI is making lower high. Okay, RSI is not making fresh low. So this is a concerning on a Bank Nifty. It is trading in a channel. So ये एक चैनल बनाया, इसमें ट्रेड कर रहा है. ये पॉइंट्स है चैनल के जिस पे चैनल प्लॉट किया है. एंड डाउन साइड में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि 38,000 तक ये जाएगा. 38,000 जो है अभी हमने टॉप से ये वेव निकाले हैं, राइट, कि ये ABC है, तो ये W बन गया, ये X बन गया, और बोल सकते हो कि Y इज़ इन प्रोग्रेस, बट
वाई यहाँ पे कंप्लीट होके ये एक्स बन सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एक्स एंड जी अभी इन प्रोग्रेस है बोल सकते हो. सो द टारगेट दैट आई एम हैविंग इज 38,000 राइट नाउ. But yeah, I need to wait and watch and understand how it moves next so that I can check if more downside is possible. So of course जब निफ्टी गिरने वाला है 17,300 तक तो ये भी नीचे जाएगा, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ. अभी ये चैनल में ही डिप कर रहा है. अगर ये कल चैनल तोड़ देता है देन वी कैन ड्रॉ सम बिगर टारगेट्स लाइक ये वाला टारगेट हम लोग बोल सकते हैं 36,700 का डाउन साइड में टाइम चैनल तोड़ देता है तो. सो टुमारो वी हैव टू वॉच बैंक निफ्टी एंड टारगेट्स. लेट मी गिव यू विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन. सो फिबोनाची एक्सटेंशन गिव्स अस द टारगेट ऑफ ए एंड बी वेव. So the targets are coming somewhere near this 38,100 to 38,000 itself. Okay, so B wave छोटा था तो 1.618 आने के चांसेस है. So 38,000 आने के चांसेस है. कल थोड़ा सा बाउंस देके गिर सकता है. So we have to watch that tomorrow, bounce and fall. So bounce can last till 38,400 to 450 levels because there is a resistance as well near this, right? So this is a resistance line. So यहाँ तक बाउंस दे सकता है मॉर्निंग में और फिर से ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये जो लग रहा है ये बेरिश सी वेव लग रहा है. सो ये 1 बोल सकते हो, 2 3 अभी इन प्रोग्रेस है, 4 बनेगा, फिर 5 का लो बनेगा. ओके, सो दिस इज हाउ द निफ्टी इज गोइंग, बैंक निफ्टी इज गोइंग टू मूव. बैंक निफ्टी हैज़ अ डाइवर्जेंसेस. So from these levels it can give sharp bounce upside. So 38,000 से bounce आने के chances है. So उस केस में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी के केस में, क्योंकि ये अभी भी चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये ज़्यादा डाइवर्जेंसेस बना चुका है. So we have to be careful on the bank nifty. So that's all on the analysis. Hope you enjoy the video and have a good night. Thank you. Bye bye.